No, sir, Yeah, but my yeah, yeah. friend attended an interview in TC. They asked about Okay, aluminum extrusion and defects that are causing in aluminum extrusion. okay, 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 okay. I have not heard about it, but the question arises that how can you extrude a non-ferrous material of aluminum, like aluminum or any kind of non-ferrous? What are the defects that are causing in it? So they have asked them, but I didn't go across that. Okay, I mean, I get this is again one of the most important questions which are, generally asked in interviews. So, okay, so all the best. I mean, like, you will do good. Yeah, just uh, okay. So let's talk to the other new joinees. Yeah. So Abdul ने बोला है कि डीआरडीओ या बीआरसी जाना है। तो अब्दुल यार मतलब क्यों करना है तुम्हें, लाइक डीआरडीओ या बीआरसी में क्यों जाना चाहते हो? जस्ट बिकॉज कि एक उसका ऐसा मार्केट में हवा बना हुआ है, या वाकई में तुम्हें इंटरेस्ट है रिसर्च फील्ड में? बिकॉज देखो, डीआरडीओ बीआरसी में डेफिनेटली पैसे तो बहुत मिलेंगे यार, सैलरी की कोई बात नहीं है, और गवर्नमेंट की सारी फैसिलिटीज मिलेगी। तुम एयरपोर्ट से जाओगे जब, तो एयरपोर्ट से उतरोगे तो तुम्हारे सामने, डीआरडीओ की मैं बात कर रहा हूँ, तो डीआरडीओ वालों को तो ये फैसिलिटी रहती है, कंपनी की कार रहती है, तो इधर उधर वो लोग जाते हैं वहां से। तो एनीवेज अब्दुल बताओ, वाकई में रिसर्च में इंटरेस्ट है, या मतलब वहां की चकाचौंध देख के तुम जाना चाह रहे हो? आई गेस अब्दुल ट्रेन से ट्रैवल कर रहा है, तो मे बी। अब्दुल, कैन यू हियर मी? Okay, okay. Anyways. So I guess I have other new joinees like Ankit Goyal. Ankit Goyal, मेरी आवाज आ रही है? Hello. You can unmute and speak. Ankit Goyal. Hello. Some introduction about you, Ankit Goyal. ये आपके माइक्रोफोन में कुछ प्रॉब्लम है। अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, सो अंकित गोयल इज ट्रैवलिंग इन बस। ठीक है, ठीक है। सो या अंकित, लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू इन फ्यूचर? फ्यूचर में क्या करना है? आगे रिसर्च करना है, या फिर आप पीएसयू के यूनिट्स में जाना चाहते हो? लाइक अभी मटेरियल साइंस, ओके। सो आर यू अ बीटेक स्टूडेंट और अ एमटेक स्टूडेंट? अच्छा 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 अच्छा, ओके ओके, यू आर डूइंग योर मास्टर्स। So you are doing your masters from like which second year or first year? Like you intend to do your project from which topic? Okay. Corrosion. Okay, okay. So, right now, जैसे अभी इंडियन ऑयल का सिंस वैकेंसी आया हुआ है 2024 में,
तो मुझे याद है जब मैंने उसका इंटरव्यू दिया था, तो उन्होंने बहुत अनएक्सपेक्टेडली, मतलब वहां पे कोरोजन के बारे में पूछा जाता है, बहुत पूछा जाता है उसके इंटरव्यू में। ज्यादा वेटेज कैरी नहीं करता है, बिकॉज आपका 80% आपका तो टोटल टोटल आपकी गेट के स्कोर के बेसिस पे होता है, और 15% जो है वो आपका जो ग्रुप डिस्कशन होता है और प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है सेशन, उसमें जाता है। 5% इंटरव्यू पे रहता है, बट 5% में भी वो लोग बहुत सेलेक्टिवली। तो कोरोजन पे मुझसे पूछा गया था कि ऑयल एंड इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा किस टाइप का कोरोजन पाया जाता है। तो मैंने वहां पे जवाब दिया था पिटिंग कोरोजन, बट दैट्स एक्चुअली द रॉन्ग आंसर। मैंने तुक्का ही मारा था, मुझे लगा था कि यार सल्फर मिलता होगा तो पिटिंग कोरोजन होता होगा लोकलाइज्ड एरियाज में। पर द करेक्ट आंसर वाज बैक्टीरियल कोरोजन और माइक्रोबायोलॉजिकल कोरोजन। ठीक है, तो अगर आप कोरोजन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, और ऐसे अगर आप आगे आ, ये इंडियन ऑयल वगैरह का इंटरव्यू दोगे, तो याद रखना कि वो लोग ऐसे बेसिक सवाल बहुत पूछते हैं। ठीक है, लाइक दे आस्क क्वेश्चंस लाइक विच इज बेटर, इम्प्रेस्ड करंट कैथोडिक प्रोटेक्शन और सैक्रिफिशियल एनोडिक प्रोटेक्शन, राइट? तो वहां पे आपको फिर एक्सप्लेन करना है, आइदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी और इन टर्म्स ऑफ प्रोसेस एफिशिएंसी। तो अभी इंडियन ऑयल की वैकेंसी आई है, तो मुझे थोड़ा याद आया, तो मैंने आपसे शेयर किया। तो अच्छा, अच्छा प्रोविजन में प्रोजेक्ट कर रहे हो, अच्छी बात है। सो anyone else who wants to come up and tell about themselves? Dinesh, you you are comfortable in English, or you can understand Hindi comfortably? Dinesh, लगता है आज किसी के बोलने का मूड नहीं है। Hello, Dinesh. You can hear me? Okay, okay. Anyways. So, see, the point is कि मैं आप लोगों से ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आपके करियर प्लान्स क्या हैं, and like what are the various opportunities that you should be working towards, you know, uh, what are the various opportunities that you should be working towards to have a better future if you intend to be in the core sector of metallurgy, is because see, we as a part of a team in FindMyTest.com, so we as a part of a team has created a test series with very selected questions that will help you not only in the written exams, but also in various short, like, we have even provided questions which are even asked at interviews. जैसे बीआरसी वगैरह में क्या होता है, वहां पे आपको कभी कभी डेराइवेशंस या छोटे मोटे कैलकुलेशंस करने को बोला जाता है। तो हमने वो सारे क्वेश्चंस भी विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस अपने टेस्ट पोर्टल में डाले हुए हैं। सो इफ यू आर इफ यू वांट टू purchase it, you can prepare both for gate as well as for the PSU exams, because we have a good set of aptitude questions also. Uh, okay, so we have a question. So Roshni Jain is asking that yeah, it's okay. You can write in like a common group chat also. Okay. So what are the benefits of getting a PhD to a person who is more interested in working towards research side? See, Roshni, the point is now, even if you are like you are more inclined towards the research side of the core metallurgy, then I would suggest you not to join PSU or even the research organizations, because the point is, even in research organization, the core research organizations like BRC or DRDO or ISRO, you have to be involved in some management work, because right now the government of India is
more towards more towards more investing towards the production side. So अगर वाकई में आपको रिसर्च में करना है, कोर फील्ड में आपको रिसर्च करना है, so I would suggest you to pursue for M.Tech or a direct PhD in good IITs. By saying good IITs, I mean the top seven sister IITs. Okay. So in these PSU organizations, definitely you will be getting a lot of scope for research work and working on important government projects. बट द पॉइंट इज यहाँ पे ना, मतलब वो मैनेजमेंट, थोड़ा सा आपको मैनेजमेंट के काम में भी आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा. सो आई नो बीइंग अ साइंटिस्ट और बीइंग अ साइंटिफिक ऑफिसर इट गेट्स रियली इरिटेटिंग कि मतलब यार क्या सोच के आए थे, क्या कर रहे हैं. बट ऑल इन ऑल दीज पीएसयू एग्जाम्स आर लिटरली वर्थ क्रैकिंग, क्योंकि आपके यहाँ पे मॉनेटरी बेनिफिट्स भी बहुत रहते हैं. एंड कोर फील्ड में तो आप काम करोगे ही करोगे, राइट? So talking about the advantages, obviously, like as I housing or cheap electricity, cheap hospital services, cheap transportation. So these are the things which will matter to you for once you are settled in your career and you want to start a family. So, anyways, but initially, I would suggest you that if you really want to work in the core field of metallurgy, please go for M.Tech or PhD. Like, like prefer M.Tech or PhD instead of preferring PSUs or research organizations like DRDO, BARC, or ISRO. Um, okay, okay. So, I guess दिस मीटिंग विल बी एंडेड शॉर्टली, सो हम दूसरे लिंक पे शिफ्ट हो जाएंगे. हाँ, तो वही मैं कह रहा था. सी आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस. आई होप रोशनी, आई होप आई आंसर्ड योर क्वेरी, राइट? So that's what I'm saying ki in Find My Test we have seen that there are you know coaching institutions which are actually not touching upon all the concepts thoroughly. So we here at findmytest.com, we here as a team, we have decided to start live sessions because we already have got registrations for the recorded sessions. Quite a number, few like students in who have already registered for test series, because we started the test series approximately 3 years back. So यहाँ पे है आपके लाइव सेशन हमने इस साल से स्टार्ट करने का डिसीजन लिया है. सो इट वुड बी गुड, जितने ज्यादा नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होंगे हम उतने ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को गाइड कर पाएंगे. क्योंकि बिकॉज सी टाइम इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर एनी student who is preparing for a competitive exam, right? So we here at findmytest.com, we want that even if you're spending 1 hour at our live session, at our live session of metallurgy classes, and even if what to say, uh, even if you are purchasing our test series and spending 20 to 25 minutes to work upon the test series, so we have included selected questions, and in our live sessions also we have we will try to give you most of the information, most of the useful information. मतलब फालतू की चीजों पे बात करना ही नहीं है, जितना जरूरी है उतना ही डिलीवर किया जाएगा. बहुत सारे मैं टेस्ट सीरीज में देखता हूँ फालतू के क्वेश्चंस रहते हैं, उनके रिकॉर्डेड क्लासेस में भी देखता हूँ. ऑनेस्टली बता रहा हूँ, देखो, एक्टिव इंफॉर्मेशन इज नॉट रिक्वायर्ड. वहां पे टाइम वेस्ट करके कोई फायदा नहीं है. तो जितना रिक्वायर्ड है एग्जाम के लिए उतना ही ये लाइव सेशंस में देने की कोशिश की जाएगी. So we would encourage a maximum number of students to register for it, right? Okay, so we have a question
that, sir, when will the scientist from BRC join? यार ये पूछ के तो तुमने सीधी सीधी बेइज्जती कर दी है मेरी. Okay, so Ankit, I am working as a scientist in BRC right now. So I worked previously I was in oil. My posting was at Chennai, but right now I'm at BRC. I'm working as a scientist in BRC. Okay, so okay, it's okay, it's okay. Don't no need to be sorry. No need to be sorry. अक्सर ऐसा होता है बिकॉज मैं स्टूडेंट्स के साथ खुल जाता हूँ तो मैं भी एक स्टूडेंट लगने लगता हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है बिकॉज आई लव टू लर्न इवन फ्रॉम माई स्टूडेंट्स राइट so it's good Ankit and okay I don't know when this meeting will end so let's take some more questions from student side. Sir, I want to join DRDO or BRC because of the fame and recognition. देखो यार ऐसे यार अगर वो फेम के लिए कर रहे हो तो थोड़ा अपना माइंडसेट को बदलो. ठीक है क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट रियली नीड्स सम एंथुजियास्टिक रिसर्चर्स राइट नाउ. पैसों के लिए या फेम के लिए तो काम हर कोई कर रहा है यार यहाँ पे. ठीक है. So please change this mindset. I have see. I know you personally. You are a hardworking student, and this is like this is my sincere request to all the students. Who are working hard to join research organizations like DRDO or BRC, DRDO or BRC. If you get an opportunity to serve this nation, then please do it wholeheartedly. Right? Don't do it for any fame or recognition. वो सब तो मिलते रहेगा यार. ठीक है उसके पीछे मत भागो. Use your knowledge. Don't stop learning because life never stops you teaching. And yeah, कोशिश करो कि आप effectively कुछ contribute कर पाओ in organizations में. Right? Who is asking? Yeah. So Mahesh is asking, sir, are you M.Tech background or B.Tech background? See, I completed my B.Tech in 2021 from NIT Raipur, and uh, then I joined JSW, but I was not happy there because I never wanted to work in any industry. Um, I started M.Tech at IIT Bombay, but I could not complete it because after the first semester, I got into Indian Oil at Chennai. So yeah, I could not complete my M.Tech. This is again one of the biggest regret I have. I guess that I would like to suggest you that if you are planning to join any PSU or any research organization,